uh, which is, I mean, the reactions in solution phase differs from reactions in gaseous phase uh, in two aspects. That is, uh, generally in gaseous phase, the encounter between the reacting particle is an instantaneous event. It happens once and then they recede. Whereas, whereas in case of solutions, reactions in solutions phase, uh, obviously reacting particles come, interact with each other or encounters each other, and thereafter this phenomena repeats for a certain period of time. Okay. There is always a duration of encounter in which a given set of particles will interact with each other more than one time. More than one time. And this is a key difference from the reactions in gaseous phase. So the time span for which two particles are close to each other, okay? And obviously when they are close to each other, they are going to keep banging on each other, okay? So the time period for which particles are close to each other, that is something which is definitely going to work in favor of chances of two particles reacting together. Okay? That is definitely going to improve the chances of particles to react with each other compared to a gaseous phase reaction. Are we getting this point? Yes, sir. So this is one of the thing which is a key difference from reaction in gaseous phase. Apart from that, there is also like a requirement of energy and orientations तो रहता है, but in case of uh, solution phase reactions, as I told yesterday, because of solvation effect, ठीक है, due to neighborhood as well as, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, as well as ये इफेक्ट ऑफ नेबरहुड जो है ना, वो एज वेल एज नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट या नेबरिंग इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट्स ही इसको बोलते हैं. और सो ये दो तरीके से काम करता है. पहला तो ये होता है कि सॉल्वेशन के थ्रू ये एक्टिवेशन एनर्जी को मीट करने में हेल्प करता है. ठीक है. Helps in meeting the activation energy requirement through solvation energy. ठीक है. और जो दूसरे तरीके से ये काम करता है, राइट ओरिएंटेशन
फॉर्मेट। तो राइट ओरिएंटेशन वाला कुछ ऐसा रहता है ना, जैसे अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको सॉल्वेट करके चारों तरफ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने पकड़ रखा है, तो जनरली इसका इनर्शिया जो होगा वो लार्ज हो जाएगा। तो सेल्फ एक्सेस वगैरह के ऊपर रैंडम रोटेशन इसका जो है ना, दैट विल काइंड ऑफ गेट रिस्ट्रिक्टेड, नंबर वन। मेनी अ टाइम्स ये भी होता है, सॉल्वेशन के बाद ये साइज इतना बड़ा हो जाता है कि इनका ट्रांसमिशन और मूवमेंट भी सिग्निफिकेंटली रिटार्ड हो जाता है, ठीक है। सॉल्वेशन के बाद इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि इनका मोशन भी रिटार्ड हो जाता है सॉल्यूशन फेज के अंदर में। नाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प इन ऑर्डर टू अचीव राइट ओरिएंटेशन, ठीक है। There are certain other effects also. There are many a times you have some right solvent molecules जो further orientation assistance provide करता है। Like मैं एक दो अच्छा, ईथर्स के अंदर में there is something called as crown ether, ठीक है। क्राउन ईथर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फोल्ड ये पैटर्न होता है ना, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, CH2 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 ये बेसिकली इस तरीके से बना है। गुड मॉर्निंग। सर हाँ बोलिए ना। सर वो कल का क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दीजिए, और नहीं है। ओके, ये क्राउन ईथर जो होता है ना, कुछ इस तरह का ही होता है। इन पॉइंट्स पे ना ऑक्सीजन्स होते हैं, ठीक है।
These are series of compounds, not a single thing. So this is how crown ethers look like, और ये point जो होते हैं ये connecting oxygens होते हैं. So basically ethyl linkage क्या होता है? CH3OCH3 ये ऐसा ही होता है और ये cyclic ether होता है. ठीक है, cyclic ether ये point CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2, 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 CH2. These all exterior points जो है ना ये सारे CH2 होते हैं और ये इंटीरियर पॉइंट जो होते हैं दे ऑक्सीजन. ठीक है, दीज पॉइंट्स आर ऑक्सीजन. अब ये हेल्प क्या करता है? अगर कोई कटायन है या ये हो गया कार्बोकटायन हो गया, ठीक है, अगर कार्बोकटायन और कोई जेनरिक कटायन अगर हुआ, ठीक है, तो उसको ये यहाँ पर एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, एंड it helps in transmitting it from ionic phase to तुम्हारा ये नॉन आयनिक फेज, दैट इज ऑर्गेनिक सिस्टम जो रहता है आपका, उसमें ट्रांसमिट करने में, जैसे कोई चीज AgCl Ag प्लस आयन हो तो Ag प्लस आयन को इस तरफ से इस तरफ लेकर के एक तरफ ऑब्वियसली आयनिक सिस्टम पोलर सिस्टम अगर है मेरे पास तो पोलर सिस्टम और नॉन पोलर सिस्टम दे आर गोइंग टू बी व्हाट मिक्सेबल होगा, मिसेबल होगा, नॉन मिसेबल होगा. दे आर जनरली गोइंग टू बी नॉन, आई मीन जनरली क्या हमेशा ही नॉन मिसेबल रहेंगे. जैसे बेंजीन को अगर मैं वाटर में डालता हूँ तो दे आर गोइंग टू बी नॉन मिसेबल. इज इट राइट? या वाटर के अंदर कोई भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डायरेक्टली डालेंगे दे आर गोइंग टू बी नॉन मिसेबल. ठीक है, until and unless it is polar, something like alcohols or aldehydes, it is always going to be immiscible. Am I making sense? तो अगर वो immiscible है तो वाटर के अंदर का कोई भी चीज को अगर मतलब यानी वाटर को हाइड्रोक्सिल या H+ दोनों में से किसी को भी अगर मैं रिएक्ट कराना चाहता हूँ मेरे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, it is going to be always difficult, isn't it? Except for alcohols and aldehydes and ketones and obviously carboxylic acid, it is going to be very difficult for organic compounds to react with water, isn't it? Yes, sir. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है. रियलिटी क्या है, हम काफी सारे रिएक्शंस वाटर के अंदर भी कराते हैं या वाटर एक काफी रेगुलर रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी. तो ये जो चीज है लाइक पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन, ये फैसिलिटेट कौन करता है? तो ये फैसिलिटेशन जो होता है दैट इज डन बाय थिंग्स लाइक क्राउन ईथर. इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू माइग्रेट फ्रॉम पोलर टू नॉन पोलर सिस्टम और नॉन पोलर सिस्टम टू पोलर सिस्टम. ठीक है, इसकी वजह से ये किसी भी पोलर एंटिटी को, ये ऑक्सीजन जो है किसी भी पोलर एंटिटी को अपने साथ अपने अंदर इनगल्फ करके रख सकता है. और ये एक्सटर्नल सील्ड जो है ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर की वजह से नॉन पोलर सिस्टम में ये इजीली माइग्रेट कर सकता है. ठीक है, दैट इज वेयर these sort of things comes into play and obviously इससे हमारा orientation factor जो होगा that is going to improve. We have controlled orientation, isn't it? यहाँ पे अगर केज में बंधा हुआ है चीज, it will definitely have a controlled orientation rather than uncontrolled one, right? So ये orientation में भी, orientation factor में भी हमारी हेल्प करता है.
This is called cage effect. Cage effect. ठीक है? Next thing is, apart from this, we also have, in case of reactions in solution, there is something called as diffusion controlled reaction. Rate at which diffusion occurs. Depend on the nature of the solvent. Diffusion controlled reactions are faster in solvents with low viscosity. Viscosity क्या होती है? It is the resistance provided by a liquid for movement of a solid fluid. ठीक है? Now the point is, अगर viscosity कम है तो it will allow a free movement of particles through it, a relatively freer movement, and that is where the diffusions are going to be faster. ठीक है? So
this point is self-explanatory. If ions of opposite charges are diffusing together, they are going to have greater diffusional rate than rate of encounter of an ion and a neutral species or two ions of same charges. The order is going to be दो opposite charges का diffusion अगर हो रहा है तो that is going to be at faster pace compared to ion and a neutral species that is going to be faster compared to two ions of same charges. ठीक है. Also, the second part of it is not only diffusion, rather also rate of encounter of two oppositely charged particles is going to be more than the normal rate of encounters. ठीक है. Or rate of encounters of an ion and a neutral species or ions of two same charges. And that is very obvious because they will have better attractive pull and therefore the diffusion rates are going to be higher. Okay. The third thing is energy orientation requirement. एनर्जी ओरिएंटेशन रिक्वायरमेंट के अंदर में हमारा होता है पाथवे चेंजेस होने की वजह से डिफ्यूजनल कंट्रोल के अंदर में समथिंग लाइक जैसे CH3 थ्राइस CCl इसका रिएक्शन होना है OH माइनस के साथ. It will form CH3 thrice COH plus Cl minus and ये ultimately हो रहा है कि this reaction takes place in two steps. पहले तो ये खुद ही फ्री आउट होता है, फ्री होता है. It breaks C into Cl. It breaks down into CH3 thrice C plus Cl minus and ये basically in solvent presence of solvent solvation की वजह से ये होता है. ठीक है. And then this thing is attacked by OH minus leading to formation of CH3 thrice COH. Okay. This is going to be a fast thing. This is going to be a slow thing relatively. ये generally solvation assisted reaction रहता है. It is a fully solvation assisted reaction. ठीक है. So basically यहाँ पर again यही है कि threshold energy is being met in presence of solvents. Solvation is taking place and therefore the reaction is happening distinctly. एक step होता है फिर दूसरा step होता है and that is how the reactions are taking place. So diffusion control इसमें कैसे help कर रहा है तो obviously अगर इसको हम polar solvent के अंदर डालते हैं solvation better होएगा. These two things are formed. Now ये जो process होएगा that will definitely the mixing of this with polar solvent will be a diffusional process. ठीक है. That is why diffusion is coming into picture. Okay. एक छोटी सी चीज और लास्ट चीज इसके अंदर में it's not related to reaction in this solution phase. That is a separate thing altogether. That thing is like there are certain photo reactions. ठीक है. Photo reactions का मतलब क्या होता है? Those reactions which are initiated or they are carried out
only in presence of or can be carried out only in presence of photons. ठीक है. और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि photons at a time एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसमें अपनी सारी एनर्जी, जो भी फोटोन की एनर्जी होती है, वो सारा ट्रांसमिट कर देता है. तो जहाँ पर भी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है ना किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, तो जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट इज अकम्पनीड बाय फोटॉन्स. ठीक है. हीटिंग के थ्रू अगर हम वो सेम एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, हाई एनर्जी, तो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी रियली लार्ज. सो इसके के बदले हम लोग फोटॉन्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट दोज रिएक्शन. एंड ये रिएक्शन जो होते हैं उनको फोटो रिएक्शंस बोलते हैं. इज इट ओके? फोटो रिएक्शंस. हेलो. Yes, sir. Reactions requiring high activation energy are conducted in presence of photons of sufficient energy as one photon interacts with one molecule slash particle at a time. Hence, transfer its entire energy into the molecule slash particle. ठीक है. And converts it into activated molecules, particles, which readily reacts. ठीक है. अब इसमें होता क्या है कि यहाँ फोटो रिएक्शंस में से अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ, जैसे ए स्पीसीज है और इस पर हमारा फोटोन आ रहा है एंड रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. एच न्यू आ रहा है एंड रिएक्शन हो रहा है, इससे डी मान लो प्रोड्यूस हो रहा है.
डिसोसिएट होकर के या एसोसिएट होकर के, जैसे भी होना है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटो रिएक्शंस जो होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटो reactions depends only on intensity of photons। ठीक है, जितने फोटॉन्स आएंगे पर यूनिट टाइम उतने ही, मतलब अगर 100 फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स ही एक्टिवेट होंगे और उसी के प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल्स बी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, राइट। It will not be dependent upon the concentration of A or any other thing. It will be only dependent on what? The intensity, that is number of photons, intensity of photon, that is number of photon traveling per unit time or interacting coming per unit time, intensity of, that is number of photons falling per unit time। Is this okay? Yes, sir. And obviously directly proportional होगा, एक फोटोन एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, it is going to be directly proportional, that's why। So rate of photoreaction is directly proportional to, ठीक है। Okay, now let us discuss a bit about nuclear uh, chemistry। ठीक है, सर ये चैप्टर का पार्ट है। क्या क्या? सर ये नया चैप्टर है, यही चैप्टर का पार्ट है। सी एक्चुअली किस बुक के हिसाब से हम देखते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप अपने HSC बुक के हिसाब से देखोगे तो ये अलग चैप्टर है, ठीक है ना। काफी Yes, सारे sir. बुक्स में ये काइनेटिक्स के साथ में दिया रहता है, फॉर द सिंपल रीजन, अपार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स, बाकी इसका मैकेनिज्म जो होता है ना, दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, so it becomes convenient for us to discuss it with respect to, or in this chapter, this particular chapter। Clear है? Yes, sir. Okay. So न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर में what we study is changes happening in nucleus, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में we primarily focus on study of nucleus, study of organization of nucleus, and second is changes in nucleus। ये दो एस्पेक्ट होते हैं, and changes in nucleus, this happens in multiple ways। It can happen through nuclear
फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर fission, then you have artificial artificial transmutation, and then you have radioactivity, ठीक है ना. So और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर में we generally study about the reasons for stability theory of nucleus and obviously ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग को अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है, जो भी है प्रेडिक्शंस ही हैं, पर ठीक है. So nucleus of any atom is going to be made up of protons and neutrons. They are also known as nucleons, ठीक है. और nucleons, proton and neutron together. Relationship between nuclei, ठीक है. So the different relationships which exist between nuclei are सबसे पहला आइसोटोपिक रिलेशनशिप. एक्चुअली आइसोटोपिक रिलेशनशिप होता है न्यूक्लियस का बिहेवियर नहीं, ये होता है एटम का बिहेवियर. नहीं, न्यूक्लियस का नहीं होता है. आइसोटोप्स, you know what it is. P is same, ठीक है, that is same Z but different A, that is number of nucleons, ठीक है. दूसरे आइसोबार्स होते हैं E plus N same, that is A same but different Z. इसके अंदर तीसरा जो है that is mirror nuclei, mirror nuclei. mirror nuclei क्या होते हैं? Just hold on for 1 minute. The next one is mirror nuclei. Mirror nuclei basically those isobars in which
number of N and P are interchanged. बात समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आइसोटोप का नाम लिखते हैं 1 3 and number of neutron proton, obviously n plus p भी लिख लेते हैं. n plus p यहाँ पर 3 है, n कितना है 2 है, p कितना है 1 है. ये दूसरा आइसोटोप देखिए हीलियम 2 3, ठीक है. जनरली इसको लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं. वैसे लेफ्ट साइड में लिखना गलत नहीं है, बट कभी कभार कंफ्यूजन, जैसे यहाँ पर He23 लिखा हमने ना, दिस विल स्टार्ट अपियरिंग टू अस मे बी कि हीलियम 2 मॉलिक्यूल ये है, जैसे H2 होता है वैसे हीलियम 2. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में इसको लिखते हैं, ठीक है. इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 1 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2 है. They are isobars because N plus P is same, and they are mirror nuclei because their N as P has got interchanged. Is it okay? So Yes, this sir. is an example of mirror nuclei. ठीक है. There are more examples. For example, carbon 13 and nitrogen 13, C13 6 and nitrogen 13 7. यहाँ पर भी again neutron is going to be 7 and proton 6, total 13. This is going to be the reverse, 6 7 and 13. ठीक है. Is it okay? Yes, sir. अच्छा एक in energy state. So nuclear isomers क्या है? Nuclear isomers are nuclei with same mass number and same atomic number. ठीक है. Nuclei with same A and Z value but differs in nuclear strength, leading to difference in energy state of nuclei. Is it okay? और इसके एग्जाम्पल्स, पहला ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन हो गया. इन दोनों का क्या होता है 1H1 ही रहता है, 1H1 ही रहता है, ठीक है. और there are other examples also. Cobalt 60 और इसके भी दो आइसोमर्स होते हैं. एक आइसोमर जो होता है दैट इज नोन एज कोबाल्ट 60M और दूसरा कोबाल्ट 60, ठीक है.
ये M जो होता है, M indicates meta stable state, that is higher energy, ठीक है, या relatively unstable state, and this is more stable state, more stable state, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा वाले में ऐसा होता है कि I remember correctly, so it is para hydrogen which is more thermodynamically stable. So meta state कौन सा होगा? Ortho वाला is going to be the meta state, right? Yes, sir. This is meta stable, ठीक है। और न्यूक्लियर आइसोम ये आइसोमर्स के बाद देयर इज फिफ्थ थिंग कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है? number of neutrons are same in two nuclei, ठीक है। तो इनका ना तो ए सेम रहेगा ना जेड सेम रहेगा, बट ए माइनस जेड जो है, ए माइनस जेड विच इज इक्वल टू एन, दैट विल बी सेम, ठीक है। दैट इज ए माइनस जेड ऑफ टू न्यूक्लियाई सेम, ठीक है। और examples are carbon 614 and oxygen 8 or 16, ठीक है। This pair is isotone, is it okay? Sodium 23 11 and magnesium 1224, these two are also isotones, so that is there. uh, there are like
न्यूक्लियाई जो भी हैं, यहाँ न्यूक्लियस जो भी हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। एक स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं और दूसरे रिलेटिवली अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो खुद से स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट करते हैं by emitting different radiations like alpha rays, gamma rays and beta rays। और ये जो होता है ये continuously emit होते रहते हैं। These are called radioactive elements, and this phenomena of spontaneous disintegration of nuclei by emitting different rays is known as radioactivity। ठीक है, न्यूक्लियाई दो टाइप के, स्टेबल अनस्टेबल। अनस्टेबल वाले जो हैं वो ये क्या बोलते हैं, दे कीप ऑन परफॉर्मिंग रेडियो एक्टिविटी। स्टेबल वाले जो हैं न्यूक्लियाइज, वो हमारे बाकी के ये तीन प्रोसेसर जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, स्टेबल वालों के ऊपर ये काम, खैर वैसे अनस्टेबल वालों के ऊपर भी ये वाला काम हम करा सकते हैं। जो रेडियो एक्टिव है उनके ऊपर भी आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन करा सकते हैं, बट अनस्टेबल जो है वो सिर्फ रेडियो एक्टिविटी कर रही है, अनस्टेबल न्यूक्लियर। ठीक है, नाउ द थिंग इज what makes a nuclei stable and what makes it unstable, that is something which needs to be investigated। ठीक है, is it okay? ठीक है, what causes stability and instability, that is something which needs to be investigated। ये पोर्शन फिर शाम को मैं करता हूँ। ठीक है, I'll do it in the evening। okay, इसमें there is something called as mass defects। जैसे ये आप इसमें भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे लोग। there is something called as mass defect which is responsible for the stability of न्यूक्लियाई। ठीक है, एक तो एंड बेसिकली वो मास डिफेक्ट जो होता है दैट गिव्स राइज टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और शॉर्ट रेंज फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ठीक है, and that is something which is responsible for stability of nucleus। That is how it has been explained। so we'll discuss it in detail क्या है नहीं। ठीक है, चलो फिर let's take a break for now। we'll meet again in the evening।